So, in our last lecture, we started with Regulation 23 and we covered the pre issue process. Basically, when I say pre issue process, it is appointment of the intermediaries, appointment of the merchant banker, then the due diligence certificates. Thereafter, we also covered how the draft of a document would be prepared and then that would be filed to SEBI. And it will be filed to SEBI and it will be made public for 21 days. Comments would be received on that. Simultaneously, you will also apply for in principle approval from the stock exchange so that your securities can get listed. Thereafter, you will reply. SEBI is going to give you a reply sending its observation or comments on your DRHP. Followed by that, you are going to file the final prospectus with the SEBI and with the ROC, and then your issue is going to start, right? The issue is going to open. So this is what we had covered broadly. So what I had written, the steps I had written in the last lecture was not in a very good handwriting that I had written. So I just changed that slide and I have written it again. So this seems to be readable. Okay. So the company is going to pass the board resolution. And what is the objective of this board resolution? This is to go public. The company wants to go public, so they will pass the board resolution, and thereafter the appointment of merchant banker is going to happen, who is going to be the book running lead manager in case of a book built issue, or he is going to be the lead manager. Then you are going to appoint the other intermediaries. Then the merchant banker will do the due diligence, right? So this due diligence by merchant banker, and then preparation and drafting of the DRHP or the draft of a document. This is also done by merchant banker, and this is in consultation with the issuer. Thereafter, the company is going to file the draft red herring prospectus to the SEBI and will also apply to, I think the apply word is missing here, and will also apply to the stock exchange for what? For the listing permission. Okay, I'm sorry. I think it was written correct. So you file this draft of a document to stock exchanges also, and thereafter simultaneously you also apply to the stock exchange for the listing permission, which is called as in principle approval. Now obtain or receive in principle approval from the stock exchange and receive the comments from SEBI on the DRHP, make changes in the DRHP and file it to the SEBI with the highlighted portion. Just tell them that yes, whatever changes you have said, we have incorporated in our draft of a document, and then SEBI is going to give you a go ahead. Thereafter, you file the red herring prospectus to the ROC, or let's say even to SEBI, and then the roadshow and the marketing activity and everything takes place. Once that is done, then the issue opens. So I have not written, so we'll still have more steps to this. Okay, but I have not added it right now because till now we have covered only till here, till step number 12, or probably we have discussed about step number 13. So we have covered only till here. So from here, all the marketing activities and everything is going to start. So as and when we will cover the issue process, I'll keep on adding more points here. As of now, today we'll start with the pricing, that is the seventh part. And pricing is important. It is important not just for your corporate funding, it is also important for your corporate restructuring, right? There also, in the valuation part, in part A of corporate restructuring, you get questions from this ICDR regulation with respect to the pricing. Thereafter, if you see due diligence, even there you can get question with respect to pricing. So this part is extremely important for all the three subjects in your CS professional. Now, if you see with respect to the pricing, first is the face value of the equity share. Now, earlier it was, so basically ICDR 2009, it used to specify the face value of the equity share. Basically, whenever a company is coming up with a public issue, so ICDR regulation used to specify that the minimum face value should be 1, or in certain cases the minimum face value should be 10. This was given in the ICDR regulation. But now
all such things are being given, taken away. Now they just say that in case the company is coming up with a public issue, in that case the face value should be again given, or it should be provided in the issue price, in the issue offer document. So whatever your offer document is, there you need to mention the face value. So the disclosure about the face value of the equity shares, this shall be made in the draft offer document, in the offer document. And now you see, after offer document you have the advertisements and the application form along with the price band or the issue price in identical font size. Now when I say price band, this is in case of a book built issue. Issue price, this is in case of a fixed price issue. Now when it says identical font size, this means the same font size in which you have written the price band, issue price and face value. So basically the face value of the share, okay, and the issue price, or let's say the price band, all of them should be in the same font size. It should not happen that you have written face value like this, 10 rupees, and issue price you are writing like this, let's say 300 rupees. This should not happen, or vice versa. Like you mentioned, the price band is, let's say, 100 to 118, and then you say face value is rupees 1. So this is somewhat concealing the information. So they have said that this is not allowed. All these are not allowed. You cannot have this kind of an arrangement. This should be in the identical font. From exam perspective, if you need to remember, is that now there is no minimum value specified. Okay. So no minimum value is specified in ICDR. Earlier it was, but now there is no specific value which is specified in ICDR. So the same like Companies Act, of course, the face value cannot go below 1 rupee. That is there. So, but that is again not given in the ICDR regulation. Then with respect to the pricing, so the issuer may determine the price of the equity share, and in case of the convertible securities, the coupon rate and the conversion price in consultation with the lead manager or through the book building process. Now, if the company is coming up with a fixed price issue, then we know that there will be not multiple price, there will be only one price given, right? And that one price is your final issue price. If you like, you can apply at this particular price. If you don't like the share, you will not apply at this particular price. Okay, so when it's a fixed price issue, there is only one price, and that is only your issue price. But when it is a book built issue, there you would be given a price band. Don't write you will be given two price, you'll be given a price band, and within the price band then you determine the cutoff rate, and that cutoff rate becomes your issue price. Now cutoff rate would be determined based on the bids. If you say this cutoff rate, this will be based on the bids. This price band and here this issue price, these two are decided by the company. These two are decided by the company along with the merchant banker. Rather, I should write this is decided by the merchant banker along with the company. Why I'm saying so? Because it doesn't happen like, you know, company saying that, I want to make my issue sorry, I want to make my issue price at 1000 rupees. Of course, Zomato public issue is at 76 rupees, right? I'm not following this offer, by the way, but as far as the Twitter is concerned, very active there, so there I have found, so it's 76 rupees. Now Zomato would definitely want that they should get 760 rupees per share and not 76 rupees. But if you say decided by the merchant banker along with the company, so how is this 76 rupees, how you have come
down to 76 rupees. How you have concluded that yes, 76 rupees should be the price? 1 rupee is the face value of the share and they are charging 75 rupees premium. So why you are charging 75 rupees premium and all those things? How do you determine? This is determined through the lead manager, the merchant banker. Now, how does merchant banker do this? Of course, there are two ways. One is he applies the valuation techniques. Okay, there is some valuation which is done this by this merchant banker. This valuation report, you are going to find it in the basis of issue price column. I will show you the draft prospectus. In that you will find it, valuation is given in the valuation report and all those calculations, it is given in the basis of issue price. So there you are going to find it. On the other hand, if I say it is the merchant banker who will get in touch with the institutional investors informally, that is called as gray market premium. So if you are on Twitter, you will come across this term GMP. So this is gray market premium. Now what is gray market premium? Here it means basically uh, nothing is written. It's you try to informally get an idea that what amount of premium the institutional investors are ready to पे। आपने सुना ये टर्म ग्रे मार्केट? क्या आपने ग्रे मार्केट सुना है? न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं? नहीं? जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम डिटरमाइन किया जाता है और ये इनफॉर्मली किया जाता है, ये डायरेक्टली आपका नहीं होता। ये बेसिकली आईपीओ जब भी आता है तो सब एस्टिमेट करते हैं कि कितना इशू प्राइस होना चाहिए। सो क्वाइट पॉसिबल दैट द वैल्यूएशन ऑफ माय कंपनी शोइंग एट 100 रुपीज, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 75 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। सो इवन इन दैट केस आई विल नॉट कम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 100 रुपीज, आई विल ट्राई टू कम अप विद 75 रुपीज और नियर अबाउट that amount, right? Because 100 rupees में वो बोलेंगे it is very expensive and I'm not going to purchase the share of that company. तो ये point आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। Guys, is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I will immediately just open the basis of issue price. Okay, check this. So this is the prospectus. Okay, in this prospectus heading में आप जब यहाँ पे जाओगे you'll find basis for offer price. So when you'll click on the basis of offer price, they'll mention the offer price will be determined by our company and TPL, okay, in consultation with the BRLM, right, on the basis of the assessment of market demand. ये आ रहा है assessment of market demand for the equity shares. This is basically, I won't say gray market premium directly, but yes, you also try to do that, which is offered through the book building. So इनका तो book building है on the basis of quantitative and qualitative factors which are described below. So they are mentioning that the face value of the share is 5 rupees and the offer price is 99.6 times. The floor price is 100 times the cap price. Just a minute. Okay, it is saying that the offer price is 99.6 times the floor price and it is 100 times the cap price. It is not floor के comparison में cap price because that is not possible. Now if you see they have got into these qualitative factors. So qualitative factors, they say that Barbecue Nation is one of the fastest growing and widely recognized restaurant brands, right? And then they say there is a steady growth, attractive offering based on consistent menu innovation and customer focus. So all these things they have given. Business strength, they are also saying for further details check our business strength. Then you have the quantitative factors. So in the quantitative factors you say that my earnings per share is this, diluted earnings per share is this. So all this they have given, right? And then on the basis of standalone, this is, so remember in your executive you have done this calculation of weighted average. Have you seen this weighted average? जो सबसे नियरेस्ट ईयर होगा उसको मैक्सिमम वेट देते हैं, राइट? आई थिंक जिनित कैन अग्री टू दिस. Sohail Yes, is sir.
right? Weighted average valuation में Janeth, why he can agree? Because I have only taught him, so he cannot deny. Others you can have this liberty to say that नहीं, ये नहीं पढ़ा था. Janeth cannot do, and since I know he had also studied well, so ये weighted average. So same thing you do, you calculate this weighted average. Thereafter other factors. Now Pooja, you can agree on these points, PE ratio, because I have taught you this FM in your executive. So just see PE ratio, right? The industry PE ratio. Remember the PE ratio of the, we pick Yes, up the sir. PE ratio of the industry and you find out the earnings per share of the company, and based on that you find out the value of the share. This is there. Then average net worth of the company. So if you see all these things, factors they have given, net asset value, all these factors they have given, and on the basis of this they say that this is the issue price, right? So the offer price is determined taking into now a lot of things. You'll find that, sir, we see only losses. If you see NAV is negative 5.33, and here also if you see net worth is also negative, they have actually eroded their net worth, right? If you see they have eroded their net worth, it's 122.28%, which means their net worth is eroded. But again, like I mentioned, that lot of the valuations come on the basis of the projections. Okay, there is also called as projected statement and these qualitative factors, and based on that they try to find out the valuation of the company. So if you see in terms of Zomato, a lot of things is based on the projection that in the coming years they are going to generate revenue from these areas, and that's how they'll go ahead. So ये आपके लिए पॉइंट है. So pricing is this. तो pricing में broadly आपको ये ध्यान रखना है that one is, if it's a fixed price issue there is going to be only one price. If it's a book build issue there is going to be a price band. Based on that price band you will determine the cutoff rate. In the price band you will have the cap price and you will have a floor price. This of course we are going to discuss in some time, and this is decided by the merchant banker along with the company, right? So and various qualitative and quantitative factors are taken. So in the basis of issue price you would say some qualitative factors are taken into consideration and some quantitative factors are taken into consideration, and based on that you try to determine what should be the issue price of the company, right? Then we have price and price band. So here it is that the issuer may mention the price or price band in the offer document. Now why they are saying may? Why they are saying may? Why they say that the issuer may mention the price or the price band in the offer document? Technically, price should be mentioned, na? That's because this is still the offer document, okay? It is still not the final prospectus. The final prospectus, which you file it to the registrar of company, that should have only one price. So this is what is given. Provided that the prospectus which is filed with the registrar of company shall contain only one price or specified coupon rate. Okay, so I have missed on this coupon rate. What is coupon rate? What is coupon rate? Interest rate. Okay, coupon rate means the interest rate. Coupon rate is this interest rate, and conversion price you obviously know that if it's a debt security which is to be converted into equity share, then how many number of equity shares would be there? So you will determine that at the very beginning. Now the issuer may mention the price or the price band in the offer document, or the floor price or the price band in case of a red herring prospectus, and determine the price later. But this should be done before filing the prospectus with the ROC, and when the prospectus is filed with the ROC it should contain only one price or the specified coupon rate. The cap on the price band and the coupon rate of the convertible shall be less than or equal to 120% of the floor price. So this we know that the gap between, when we say a price band is given, here you are going to get cap price and here you are going to get floor price,
and the maximum gap would be 120%. Rather, the maximum gap should be 20%, which means this cap price can be maximum of 120% of the floor price, right? Then the floor price or the final price shall not be less than the face value. Of course, why? Because it would then result in the issue of shares at discount, which is prohibited by the Companies Act. Then it says where the issuer opts not to make the disclosure of the floor price or the price band in the red herring prospectus, the issuer shall announce the floor price or the price band at least 2 working days. Now, this is important, that at least 2 working days before the opening of the issue, you have to mention the price band and in which you had issued the pre-issue advertisement. So just remember that the price band or the floor price would be determined or basically announced 2 working days prior to the opening of the issue. So I'll just highlight this. The issuer shall announce the floor price or the price band at least 2 working days before the opening of the issue. Okay. Then the announcement which is referred in subsection 4, this should also contain the relevant ratios. So we saw those relevant ratios. Why you are finding out this? Computed for both upper and for the lower end of the price. And also a statement drawing an attention of the investors in the column called as basis of issue price in the offer document. Now, the announcement referred to in subsection 4 and the relevant ratios referred to in subsection 5, this will also be disclosed on the website of the stock exchange. So basically you upload this entire document only and there all these ratios would be given here, right? Now, differential pricing, this is again an independent question. एग्जाम में कई बार आपको सिर्फ इसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि क्या हम डिफरेंशियल प्राइसिंग का ये मतलब है क्या हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं अपने अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड that there are 3 categories of investors. Okay, there are 3 categories of investors who are going to invest in the public issue. So one is your institutional investors. Okay, and then you have who are the non-institutional investors. Now, institutional investors, we have already covered the QIB, qualified institutional buyers. So mutual funds, banks, institutions basically, right? In case of non-institutional investors, जो ये सब कैटेगरी में फॉल नहीं करते, इसमें 2 कैटेगरी आ जाएगा. One category would be called as the retail investors, and then they are other non-institutional investors. So retail investors, if I say, they are the one who are investing not more than 2 lakh rupees. So their investment is less than 2 lakh rupees. Okay. Other non-institutional investors, the people who are investing in the IPO other than the institutional investors and their amount is 2 lakh or basically more than 2 lakh rupees. So they are non-institutional investors and this. Now, apart from the investors, who else contribute in the public issue? One is the promoters. The promoters also subscribe to the shares or they may subscribe to the shares in the public issue. Thereafter, there is also certain reservations which are kept, and these reservations are kept for the employees and then for the shareholders of the listed company. Now, if you say, sir, company is already listed, then why the company is coming up with the IPO? Like why we are discussing here? It is because let's say Reliance is a company, okay, which is already listed and it has a subsidiary, let's say Geo. Now, when Geo is going to come up with the public issue, Reliance can make certain reservations for the public issue of Geo, that if you are a shareholder of Reliance, then you have some reservations and you can also subscribe to the shares of Geo. Okay, so this is what is being given here, and also the differential pricing would be done
to the different sorts of investors. Now, what are the rules for differential pricing that we are going to study right now? I hope the concept of differential pricing is clear to all of you, right? Yes, sir. Okay. Now here it says that the issuer may offer its specified securities at the different price. So this is differential pricing, but subject to following. So subject to following means these are the conditions. First and foremost, the retail individual investors or the retail individual shareholders or the employees. I mentioned you that it is your the reservations are made for the shareholders of the company, listed company, when the group company is coming up with a public issue, or let's say the employees of the company, इनके लिए भी reservation रहते हैं. So to them they are entitled for reservation. Only these three categories they are entitled for reservation. We'll be discussing about that right now in some time when we do regulation 33. And the securities may be offered, okay, at a price which is lower, not lower than by not more than 10%, which means these people can get a maximum discount of 10%. But maximum discount of 10% on what price? Okay, 10% is fine, but 10% the price on what? Of the price at which the net offer is made to the other categories of the applicants, excluding the anchor investors. So whatever price you have offered it to the other investors, उसके comparison में retail individual investors, retail individual shareholders and employees, they can get a discount of 10%. Further, it says that in case of a book built issue, the price of the specified securities offered to the anchor investors should not be lower than the price offered to the other applicants. अभी इसका क्या मतलब हो गया? See what happens, anchor investors पहले से bid करना शुरू करते हैं, one day prior they start doing the bidding and all. तो अगर आप एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर देते हो या आप ऑलरेडी वहां पे एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर चुके हो, लेट्स से आई हैव इशूड इट एट 80 rupees. Later on, as per the bids, the cutoff price comes out at 87 rupees. Now what is going to happen? The investor, the anchor investor is going to further pay 7 rupees more to the company. He cannot say no, my contract is already set at 80 rupees, so why should I pay 7 rupees more? That's because in case of a book build issue, the price of the specified securities which is offered to the anchor investor, this shall not be lower than the price which is offered to the other applicants. So, sir, why investor, anchor investor is going to pay? Because at the end of the day, uh, there was an offer which was made at 80 rupees and this was accepted at 80 rupees. The contract was made at 80 rupees. Now, how can they demand 7 rupees more? That's because in their agreement, in their agreement with the anchor investor, this particular clause will be there. Okay, so just remember you need to put this clause in the agreement with the anchor investor, the shareholder agreement or whatever, share subscription agreement or the investment agreement, whatever you say, right? The anchor investor will have to put this clause that the price which is being offered, the price which is being offered to you is subject to change, and in case the cutoff price comes out to more than the price at which the securities are issued to you, वहां पे you'll have to pay the difference. Okay, sir, what if यहाँ पे 80 rupees की बजाय let's say 72 rupees हो गया कट ऑफ प्राइस, then in that case now you cannot say that 8 rupees refund करो. कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा हो गया तो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट व्हेन यू purchase, or basically when you the anchor investors they subscribe to the securities of the company, because यहाँ पे क्लियरली बोला है. और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट केस ऑफ अ बुक बिल्ट इशू, देखो फिक्स प्राइस में देर इज नो प्रॉब्लम, आप हर एक को एक ही प्राइस में शेयर्स इशू करोगे, सो देर इज नो ग्रे एरिया, आई वुड से दैट फाइनल प्राइस क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, वी जस्ट नो द प्राइस बैंड एज ऑफ नाउ, that is not going to happen. Why? Because here if you see, in case of fixed price issue there is only one price, right? Now in case the issuer opts for alternate book building method, now alternate book building method को एक बार मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ, इसको आप अभी दिमाग मत लगाओ, we'll do that later. Now also remember, when you are offering discount, just don't write I have given 2% discount. Now 2% discount, this should be expressed in terms of rupee also.
The discount should be expressed in rupee terms, that if I am giving a discount of, let's say, 10%, it is okay. You give a discount of 10%, but just mention that what is the rupee terms, and this has to be mentioned in the offer document clearly, right? Is this part clear? Differential pricing and the price band, price band pricing. Yes, sir. These three regulations, exam perspective, very important. It's very important. This entire part is very important. So if we just do a quick recap, so we saw that in regulation 27, what does regulation 27 say? It says that the face value should be clearly mentioned along with the issue price. Then we have regulation 28, which stated about the pricing. So the pricing will be determined by the company and the merchant banker, and they are going to come up with one price, or they will come up with a price band, and whatever is the basis on which this they have calculated the offer price or the price band, this is going to be mentioned in the offer document under the head basis of issue price. After that, you are going to have regulation 29, and regulation 29 provides you the price and the price band. It says that how you are going to determine the price, it is given here, but what should be the price and the price band, you have some guidelines with respect to that in regulation 29. Thereafter, you have regulation 30, which says that the differential pricing, if you want to do, you can do that also. Very important, this particular part, right? Now moving ahead, we can see you have part 8, which is the issuance condition and the procedure. So now you'll get the issue procedure, right? So here if you see, first thing is minimum offer to the public. You remember प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, ये हमें किसने बताया था? आईसीडीआर रेगुलेशन ने बताया था दैट पोस्ट इशू कैपिटल 20% रहना चाहिए. रेगुलेशन 31 आपको बता रहा है कि अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो मिनिमम पब्लिक को कितना ऑफर करोगे. तो मिनिमम पब्लिक को आप ऑफर करोगे whatever is written in the SCRR. Okay, so regulation, your rule 19, okay, of the SCRR, whatever it provides that इतना मिनिमम पब्लिक होना चाहिए, उतना पब्लिक आपका रहेगा. Now I will share a concept paper. Okay, I'll share the concept paper with respect to the minimum public shareholding. मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसका एक कॉन्सेप्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. I'll share it with all of you. Maybe you can read and it is more like a self-explanatory thing. But I'll tell you this concept paper, which says that minimum public size should be 25%, right? अब यहाँ पे सीधा 25% क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कल को अगर SCRR चेंज हो गया, they make it 30, so they don't have to amend ICDR regulation. ICDR regulation automatically gets amended and you have this 25% automatically becoming 30%. So what was the logic that minimum offer आपको public को जो करना है? So now when I say the shareholding pattern, आपने अगर एनुअल रिटर्न वगैरह को फाइल किया तो आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो कैटेगरीज आ जाएंगे. वन इज द प्रमोटर एंड देन यू हैव द अदर्स. सो इसको पब्लिक की तरह ट्रीट किया गया है. और इनका स्टेक कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑफ 25%. इनका स्टेक कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 75%. बट इसमें एक और पॉइंट है दैट व्हेन द कंपनी इज कमिंग अप विद अ पब्लिक इशू, जब आईपीओ आ रहा है कंपनी का, तो उस वक्त इनका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल. Now, what is the logic of minimum offer to the public? It is if you are ready to come to pub market, if you're ready to get your shares listed, then at least give a sizable amount of chunk of your shareholding to the public so that एक proper price discovery हो पाए.
सी व्हाट हैपेंस, अगर एक शेयर थिनली ट्रेडेड है या फिर एक शेयर का मार्केट में इतना ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है, सी बिकॉज प्रमोटर्स वाला जो शेयर होल्डिंग है, क्या ये सर्कुलेशन में रहेगा? डू प्रमोटर्स वुड डू इंट्राडे? रिलायंस में मिस्टर मुकेश अंबानी क्या इंट्राडे खेलेंगे? आज रिलायंस का भाव बढ़ गया, बेच दो, गिर गया, शेयर खरीद लो, नो. So this is not being traded, this part is being traded. Now this, they had concluded that 25% is a decent amount, 25% रहना चाहिए for adequate price discovery, नहीं तो यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी करना डिफिकल्ट हो जाएगा. So this is for the price discovery, you need to have the minimum public offer. Also वॉच आउट, आने वाले टाइम पे शायद ये 25 को 35 कर दिया जाए. दिस इज बीइंग प्रपोज्ड. आई थिंक दिस वाज प्रपोज्ड इन 2019 बजट. दिस वाज discussed that it is to be made at 35%. So I think the new SEBI code which is going to come, वहां पर आपको ये शायद इसके ऊपर मिल जाएगा. Anyway, next is the allocation of the net offer. Very very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना होगा. सबसे पहले तो ये समझ लो, ये वर्ड जो नेट ऑफर है, ये नेट ऑफर का ही क्या मतलब है. सो नेट ऑफर मीन्स एन ऑफर ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू द पब्लिक. सो ऑफर टू द पब्लिक but does not include the reservations and the promoter contribution brought in as a part of the issue. Then you get offer through offer document. ये भी आपको मिलेगा. What is offer through offer document? It means the net offer along with the reservations. Now you know reservations for the employees of the company and also to the uh, shareholders of the group company, correct? Thereafter, यहाँ पे एक पॉइंट आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स अ इन्वेस्टर other than a retail investor and a qualified institutional buyer. So I mentioned you there are three categories of investor. The non-institutional investor category is basically जो दोनों ही category में fall नहीं करता. And then you have the definition of retail investor. So retail investor means an individual investor, okay, who applies or bids for a specified security जिसका की वैल्यू इज नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज. तो 2 लाख से ऊपर उनका वैल्यू नहीं होना चाहिए. 2 लाख से ऊपर का अगर वैल्यू है then you fall into the category of non-institutional investors. Okay, now with this I give you one example. Let's say there is a LLP. Okay, there is a LLP. This LLP is making a bid for, let's say, 3 lakh rupees. Which category of investor it is? QIB, retail, NII. Which category it will be in? 3 lakh rupees. If a LLP is investing 3 lakh rupees in the public issue, which category it would fall in? Sir, NII. NII. So here it is NII. Okay. Now if I ask you, this particular LLP is investing, let's say, 1,50,000 rupees. Abhi? Abhi? Sir, RII. Check karo. Check the definition. Can it be a retail investor? So it No. will still be NII. It will Yes. still be a NII, NII. right? So Yes. whatever these breakups and all which we have, this is all for the individual investors. See the word that they have used is, see नाम से देखो, retail individual investor. So retail individual investor means it's an
इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल जिसका वैल्यू ये, इसके अलावा इंडिविजुअल अगर 2 लाख रुपीज से ऊपर बिडिंग करेगा या 2 लाख ऊपर से पैसा लगाएगा तब तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में फॉल करेगा ही करेगा। ओके, फर्दर if there is other than individual who is investing, then in that case that person would specifically fall into the category of non-institutional investor if that entity is not a QIB. If it's a QIB then it's a separate issue, otherwise it will fall into the category of non-institutional investors. आप बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो बेसिकली अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको मैं एक चार्ट फॉर्मेट में आपको बता दूं। सो व्हाट हैपेंस इज यू गेट द ऑफर साइज एज पर द प्रोस्पेक्टस। द ऑफर साइज एज पर द प्रोस्पेक्टस, इसमें से आप डिडक्ट कर देते हो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को यहां से डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। ओके, एक बार ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट आ गया तो इसमें से आप डिडक्ट करोगे रेजर्वेशंस, और रेजर्वेशंस को आप जब डिडक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेट ऑफर। इसको कई बार NOTP भी बोलते हैं, विच स्टैंड्स फॉर नेट ऑफर टू पब्लिक। ओके, अब ये एक बार आप जस्ट एक बार गो थ्रू करो एंड सी दिस चार्ट। डज दिस मेक सेंस? Does this make sense? Okay, Yes, sir. ऑल राइट। ये ध्यान रखना बिकॉज जब हम अंडर राइटिंग और के बारे में बात करेंगे ना, वहां पर ये चीज़ बहुत काम आएगा। कौन सा पार्ट अंडर राइट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। लाइक जिनित, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, Yes, sir. रिमेंबर आपका एक Yes. डाउट था अंडर Yes. राइटिंग के ऊपर, तो अब आपको पता चलेगा। तो अंडर राइटिंग जो होगा वो यहाँ के लिए होगा, इसका भी Okay. कुछ परसेंटेज होगा। सो नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट एंड नेट ऑफर, क्योंकि मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा वहां हाँ. पर हम किसको देखेंगे, वहां पर ये सब चीज काम आएगा। राइट, सो दिस चार्ट इज गॉट अ सिग्निफिकेंस, बट अगेन यू विल बी एबल टू कोरिलेट दिस लिटिल लेटर। अब देखो फर्दर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो जब हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ द नेट ऑफर, तो आप ये देखो आपका जो इशू है, विच इज द टाइप ऑफ इशू विच यू हैव। Of course, we say the type of issue falls into two categories. One is the fixed price issue and another is the book built issue. So constantly we have been discussing about the one and the same thing again and again, that you have the fixed price issue or you have the book built issue. But अभी जब हम बात करते हैं type of issue, so we would say regulation 6 सब रेगुलेशन 1, क्या इसके कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं या इसके कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे, ये आपको देखना होगा। अगर इसके कंडीशंस फुलफिल होते हैं देन अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, वन you can come up with a fixed price issue, another you can come up with a book built issue. This is a fixed price issue and then you have the book built issue. अगर आप 6(1) के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते देन इन दैट केस योर इशू इज अंडर रेगुलेशन 6(2), याद आ रहा है?
a company which is or issuer which is not complying with the conditions or do not satisfy all the conditions of 6.1, then that company falls into the or that issuer falls into the category of regulation 6.2. and under regulation 6.2 आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको कंपल्सरीली बुक बिल्डिंग करना पड़ेगा. नाउ डिफरेंस क्या है सर इस बुक बिल्डिंग में, इस बुक बिल्डिंग और फिक्स प्राइस इशू में? अपार्ट फ्रॉम that you get a fixed price here and here you have a price band, it is the allocation. How you allocate in a fixed price issue would be different. How you allocate in this book building, it will be different. And how you do the allocation when it comes to compulsory book building, that is going to be different. And your current regulation just deals with the same thing. Okay. रेगुलेशन 32 आपको पूरा पूरा इसी के बेसिस में बताएगा कि इसका एलोकेशन एज पर रेगुलेशन 32 इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इसका एलोकेशन एज पर रेगुलेशन 32 इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड इसका एलोकेशन एज पर रेगुलेशन 32 इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अब आप देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ व्हेन इट इज अ इशू विच इज मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग, तो अगेन आई जस्ट राइट इट हियर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर. अब मैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज रखूंगा, ठीक है. यू हैव द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो कैन आई राइट QIB ओनली? आप समझ जाओगे QIB आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. देन यू हैव द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड यू हैव द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स RII. ओके. QIB के अंदर फिर बाइफर्केशन हो जाएगा. एक होगा जिसको हम बोलेंगे एंकर इन्वेस्टर और एक कैटेगरी आपको मिलेगा अदर QIB. Now I will tell you why I have done this bifurcation, but ये आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. अब देखो रेगुलेशन रेगुलेशन 32 सब रेगुलेशन 1. In an issue which is made through book building process under sub regulation 1 of regulation 6, तो बेसिकली ये कौन सा हो गया? ये वाला कैटेगरी हो गया. सो व्हाट I'll do, I'll also write, you'll understand it later, सब रेगुलेशन 1. यहां पर आपको क्या बताया हुआ है? द एलोकेशन ऑफ द नेट ऑफर. नाउ व्हेन इट से द एलोकेशन ऑफ द नेट ऑफर, विच पोर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट? जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे A, B और C. ये जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? A, B और C. Sir, C part. C पार्ट के लिए, राइट? सो इसका आएगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. Now why this becomes important? You can get a practical question in exam where they will give you issue size is this, then they'll mention promoter contribution, offer reservations and all they'll give, and they will say that find out what is going to be the basis of allotment, and that can be a good question in your exam, right? So वहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. तो आप यहाँ पे अगर देखो allocation in the net offer category shall be as follows. They say not less than 35% to the retail investors. This means minimum 35% आपको किसको देना होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स को. Not less than 15% to the non-institutional investors, which means minimum 15% to the non-institutional investors. अब मुझे बताओ मिनिमम 35 इनको, मिनिमम 15 इनको, तो QIBs को आप कितना दोगे? मैक्सिमम 50. ये क्लियर हुआ? क्योंकि बचेगा ही उतना, है कि नहीं? और वाइस वर्सा यू कैन से मैक्सिमम if you are going to give to your QIB 50% at the max, then the balance 50% has to be given to this category. Guys, is this clear? Yes, sir. Right? अब ये जो मैक्सिमम 50% आप दे रहे हो उसमें आपको क्या बताया हुआ है? That 5% of which
shall be allocated to the mutual funds. तो QIB का जो पोर्शन होगा 5% ऑफ अगेन व्हाट 100. सो बेसिकली जो यहाँ पे 5% बोला है, दिस इज 5% ऑफ 100 और दिस इज 5% ऑफ दिस 50. आंसर इज 5% ऑफ दिस 50. ओके, एंड नॉट ऑफ 100, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है 5% ऑफ विच मतलब जो आप यहाँ पे QIBs को इशू कर रहे हो उसका. गाइस दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll just write it. So this is for a book building or a book built issue under regulation 6 sub regulation 1. यहां पर क्या रहेगा, जो भी आपका नेट ऑफर टू द पब्लिक है NOTP का मैक्सिमम 50% टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को आप जो भी दे रहे हो उसका 5%, इसमें भी मिनिमम 5% ऑफ द QIB पोर्शन. दिस शुड बी गिवन टू द मर्चेंट बैंकर. ओके, एंड यहां पे जो भी आपका बैलेंस है टू द अदर्स. सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो दे शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 15% and the retail individual investors would get a minimum of 35%. क्या आपके मन में अभी डाउट आएगा सर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें? क्या आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि सर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो मिनिमम 20 होना चाहिए था? वेयर इज प्रमोटर No. कंट्रीब्यूशन? व्हाई? बिकॉज So it is already deducted. NOTP is after deducting the promoter contribution. Okay, so ये आपको ध्यान रखना है. Once it had happened, student was asking me, sir NOTP में promoter contribution तो आपने बताया नहीं, and even the reservations are also not here. तो reservations कहाँ पे fall करेगा? So all those things are not a question which is to be discussed here. Why? Because all this is already settled. आपने deduct कर दिया है PC को, आपने reservations को deduct कर दिया है, उसका जो बैलेंस पोर्शन है अब आप उसको यहाँ पे बाइफरकेट कर रहे हो, उनको एलोकेशन कर रहे हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस. Provided that the unsubscribed portion, this is again for 6.1 only, provided that the unsubscribed portion of either of the categories specified in clause A or clause B may be allocated to the applicants in the other category. तो बेसिकली यहां से यहां स्पिल ओवर हो सकता है, यहां से यहां स्पिल ओवर हो सकता है. एंड आगे क्या बताया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट in addition to the 5% allocation in terms of clause C, mutual funds will be eligible for allocation under the balance available for the QIB. So यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो आपने म्यूचुअल फंड्स को दिया दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन गिव, ये तो इनके लिए रिजर्व करके रखा है. दिस इज मोर लाइक अ reservation. Apart from that they can also invest here. So if let's say my mutual fund company has already subscribed 5%, so tomorrow let's say Vinisha's mutual fund company wants to again subscribe, so we both are mutual fund, we both are a QIB, I have been allotted under the reservation category, so can Vinisha be allotted securities here? Answer is yes, you can be given here also. Vinisha would not be denied that since mutual funds have already been issued, now we are not going to give it to you, ऐसा नहीं है. एंड यहां से यहां स्पिल ओवर अलाउड है. सो ये आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो गया अंडर अ बुक बिल्ट इशू विच फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ 6.1. डज दिस मेक सेंस? डज दिस Yes, मेक sir. सेंस? ये आपको याद रखना जरूरी है. ठीक है, इसको आप याद रखना अच्छे से. देन इट इज
an issue which is made through the book building process under सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6, जिसने वो तीन कैटेगरीज को मीट नहीं किया। तो उसमें अगर आपको याद हो तो आप देखो, हियर इट इज नॉट मोर देन 10% टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, विच मीन्स ये क्या हो गया, मैक्सिमम 10% to the retail individual investors, not more than 15% to the non-institutional investors, which means maximum 15% to the non-institutional investors. And then it says not less than 75%, right? Which means अब qualified institutional buyers का यहाँ पे minimum allotment कितना होगा, 75%, जिसमें अगेन सेम पॉइंट है कि 5% शुड बी एलोकेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स। नाउ अगर आप सेबी के परस्पेक्टिव से देखो तो आपको एक चेंज नजर आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इफ यू फॉल इन 6-1 और इफ यू फॉल इन 6-2? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? और if I say a company falls into 6-1 and if I say a company falls into 6-2, क्या आपका दोनों कंपनी के लिए क्या परसेप्शन होगा? What will be the nature of a company which falls into 6-1? A company which falls into 6-1, what will be the general perception of that company? And what will be the general perception of a company which falls into 6-2? क्या रहेगा उनका? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ये पेंटिंग नहीं कर रहा मैं। सर 6-1 में सर परसेप्शन ये रहेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, और 6-2 में प्रॉफिटेबल नहीं है, मोर ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी है। इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, या उतना प्रॉफिट आपको वहां पर नहीं दिख रहा है नहीं जितना मिल प्रॉफिट आपको 6-1 एक में मिल 6-1 में दिख रहा है हाँ आपको। अच्छा, एज अ रेगुलेटर, इफ यू आर सेबी, एज अ हाँ रेगुलेटर आप क्या पसंद करोगे? दैट एक ऐसा कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा हो या कम हो? सर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हो। ज्यादा हो। तो आप यहाँ पे देखो रिटेल इन्वेस्टर्स का अमाउंट कैसे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, दे आर सेइंग मिनिमम 35% टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। बट यहां पर अगर आप देखो वर्डिंग्स चेंज कर दिया और क्या बोला, रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 10%। गॉट इट? दूसरा, यस सर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को यहां पर क्या बोला है, मिनिमम 75, हावेवर यहां पर क्या बोला था, मैक्सिमम 50%। ये दिख रहा है आपको? तो ये आपको एक याद रखने का तरीका हो गया, दैट इन केस ऑफ अ कंपल्सरी बुक बिल्डिंग to the non-institutional investors and to the retail investors, okay, which falls into 6-2, compulsory book building means which falls into 6-2, in that case रिटेल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए वर्डिंग्स क्या रहेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। फॉर क्यूआईबी इट विल बी मिनिमम, बिकॉज वी वुड वांट इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कौन लगाए, क्यूआईबीज लगाए। व्हाई? बिकॉज क्यूआईबीज आर द सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। वो अगर यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ के लगाएंगे एंड दे विल डू देयर अदर ड्यू डिलिजेंस एंड एवरीथिंग। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भावुक हो जाता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कि आज जोमेटो में जो तुम खाना ऑर्डर कर रहे हो उसको अगर तुम जोमेटो के शेयर प्राइस में लगा दो तो कल 5 साल बाद तुम अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल पाओगे। यू नो, all these kind of memes are getting circulated right now on entire social media, whatsapp पे आप देख लो, twitter पे, right? All this you are going to get it there. So ये क्या logic है? It's because retail investors are driven by emotions. वो बहुत उनको sophisticated investor नहीं बोला जाता। Like I mentioned, how many of them who are actually subscribing to the public issue or who apply for the public issue, how many of them actually study the offer document? Rarely you will find, rarely you can actually count on fingers that these people have uh, gone through the ऑफर डॉक्यूमेंट। इन्होंने इस पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ा, चाहे वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो, डीआरएचपी हो, उन सबको उन्होंने प्रॉपर पढ़ा और उसके बाद में वो डिसीजन दे रहे हैं। बेसिस ऑफ प्राइस, बेसिस ऑफ प्राइस भी कैसा रहता है, इफ द प्राइस यू नो 2 डिजिट में है तो सस्ता लग रहा है, 3 डिजिट है तो महंगा है, 4 डिजिट है तो और भी महंगा है। yesterday I saw one tweet of a company secretary, senior है,
आई थिंक, आई डोंट नो वेदर आप लोग जानते भी होंगे, जिगर शाह, जिगर सर का एक ट्वीट था और उसमें इस तरह से था, यू नो, ऑफ कोर्स सरकास्टिकली उन्होंने मीम के हिसाब से लिखा दैट द फेस वैल्यू ऑफ जोमैटो इज 1 एंड द इशू प्राइस, ओके, इज 76 रुपीज एंड पीपल आर सेइंग दैट जोमैटो का शेयर बहुत चीप मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है, क्यों? बिकॉज दिस इज इन डबल डिजिट। नाउ अगर जोमैटो का फेस वैल्यू 10 होता, कितने लोग 760 रुपीज पे करते? सो ही हैड एक्चुअली मेड अ पोल एंड उसमें था 0% वुड हैव पेड 760 रुपीज। हिज क्वेश्चन वाज, इफ फेस वैल्यू इज 1 and the issue price is 76, so if the face value goes 10 times, issue price को भी 10 times कर दिया, तो वो ये बोल रहे हैं how many of you are going to pay for this? बेसिकली अगर एक का 76 है, 10 का 760, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक तो दोनों यही बताता है, बट देन दे सेड दैट नो, अगर फेस वैल्यू 10 होता तो 760 रुपीज हमें बहुत एक्सपेंसिव लगता, ऐसे लगता है इट इज ओवर प्राइस्ड। बट येस, फेस वैल्यू 1 और इशू प्राइस 76 है, तो सबको लग रहा है कि हाँ यार, दिस इज फेयरली प्राइस्ड। दिस मोर और लेस लुक्स लाइक दैट, यू नो, माइंड गेम्स जो करते हैं ना पॉपकॉर्न के लिए, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। सो इफ आई से दिस इज फॉर 90 एंड दिस इज फॉर 80, people would say no, no, large ही लेते, large सस्ता लग रहा है। But if I do it, let's say this is for 90 and if I put it 50, then people will not go for large, they would say no, medium ही लेते हैं, ये सस्ता है। Have you seen that Discovery Channel पे Mind Games? So more or less the institutional investors, they don't go by this logic. They read, they discuss, and then they do research and everything, and after that they invest. So retail investors को यहाँ पर सेबी एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। Guys, is this clear? Yes, sir. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, प्रोवाइडेड यहाँ पे वही बताया कि स्पिल ओवर यहाँ पे हो सकता है एंड 5% इज टू बी गिवन टू द म्यूचुअल फंड्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दे कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस 5%, दे कैन गेट, अदर म्यूचुअल फंड्स कैन ऑल्सो परचेज। देन it is if the issue is made through the book building process, the issuer may allocate up to 60% of the portion which is available for allocation to the qualified institutional buyers to the anchor investors. अब यहाँ पे जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया, इसमें एक और कैटेगरी निकलेगा जिसमें क्या होगा, 60% to the anchor investor. 60% would be given to the anchor investors. Now you really need to understand what is anchor investor. तो anchor investor को define किया गया है और उसमें क्या बोला है, anchor investor is a QIB. Okay, anchor investor is a QIB जिसका application value जो होगा, this will be at least 10 crore rupees in the public issue. Okay, guys, is this clear? Yes, sir. Made through book building process in accordance with these regulations और they make a application of 2 crore. ये basically आपका चैप्टर 9 अगर आ रहा है तो ये आगे के उसमें एसएमई और इन सब में, तो आपको बस ये ध्यान रखना है who is an anchor investor. ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा। डेफिनेशन ऑफ एंकर इन्वेस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंकर इन्वेस्टर इज अ QIB प्लस इनका मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना होगा, this would be 10 crore rupees. Okay guys, this is clear? ध्यान रखना बोथ बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर आप सिंपली यहाँ पे देखो दैट इन केस ऑफ अ बुक बिल्डिंग और बुक बिल्ड इशू, वो चाहे कंपलसरी बुक बिल्डिंग हो या 6-1 वाला बुक बिल्डिंग हो, इन बोथ द केस आपको जो भी आप QIB को दे रहे हो, QIB का 60% शुड बी गिवन टू द एंकर इन्वेस्टर। गाइस क्लियर? QIB का मिनिमम 5% to the mutual fund and balance to the others. Does this make sense? Does this make sense? अब जाके आपका बुक बिल्डिंग का जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। Does this make sense guys? Yes, सर sir. सर एक क्वेश्चन है। हाँ,
सर इसमें लिखा है द इशूअर मे एलोकेट अप टू 60%, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है ना कि एंकर इन्वेस्टर को 60% एलोकेट करना ही है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जो एंकर इन्वेस्टर्स है उसको अप टू 60% पूरा जाता है। हाँ यहाँ पर जो ये है, इधर अगर इसमें अगर आप देखो तो इसमें जैसे बताया हुआ है द इश्यूअर में एलोकेट अप टू, तो ये अप हाँ टू वर्ड है यहाँ पे। ओके हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अप टू 60%, उनको एंकर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर देना है, ओके। तो वो दे बट सकते हैं। हाँ सर, हाँ, उनकी मिनिमम उनकी मैक्सिमम। हाँ हाँ उनकी डिस्क्रिशन है, मतलब देना है तो दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते, ऐसा ऐसा है क्या सर? हाँ, इट क्योंकि इज उसमें मे लिखा हुआ है। ओके। सो बेसिकली इफ आई जस्ट से, आई थिंक आई यूज द वर्ड मिनिमम, ये आपका ऐसे हो जाएगा कि अप टू 60% जो है, मतलब ये मैक्सिमम आप इतना एंकर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को अप दे दो, हाँ ये आप इतना एंकर इन्वेस्टर्स को दे दो। ओके, राइट? डज यस दिस सर मेक सेंस? यस ओके। और एक चीज देखना, एंकर इन्वेस्टर का डेफिनेशन इंडिपेंडेंटली आपको पूछ सकता है, who are the anchor investors, or they can give you, these people have given the public issue, identify the anchor investors here, right? आगे देखिए, in an issue which is made through the book building process, okay, the allocation of the net offer category other than, this is other than through the book building process, तो ये आपका कौन सा हो गया, फिक्स प्राइस इशू। तो फिक्स्ड प्राइस इशू के लिए आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, it says minimum 50% you need to give it to the रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब आप देख रहे हो फिक्स्ड प्राइस इशू मतलब कंपनी और फंडामेंटली स्ट्रांग है, सो मिनिमम 50% टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड द रिमेनिंग इज टू बी गिवन टू द इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स other than retail individual investors and other investors including the corporate bodies, institutions, irrespective of the number of securities which have been applied for। तो यहां पर क्या पॉइंट आ गया आपका, the concept of non-institutional and institutional is eradicated। यहाँ पर आपके पास सिंपली क्या है, फिक्स प्राइस इशू के अंदर यू हैव इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स एंड यू हैव अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर देर आर दो कैटेगरी, ओके, वन इज रिटेल एंड अदर इज अदर देन रिटेल। गाइज दिस इज क्लियर, यस सर राइट? अब यहाँ पे बताया हुआ है प्रोवाइडेड दैट द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ आइदर ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन ए एंड बी। अब पॉइंट ये है, यहाँ पे ए एंड बी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ए एंड बी तो कुछ है ही नहीं। अब ए एंड बी का यहाँ पे क्या मतलब है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस 1 and 2 स्पिल ओवर, यहाँ से यहाँ से यहाँ स्पिल ओवर हो सकता है। सो लेट्स से इफ रिटेल्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू मच देन द बैलेंस कैन बी गिवन टू देम, इफ दे हैव नॉट सब्सक्राइब मच द बैलेंस कैन बी गिवन टू रिटेल। तो स्पिल ओवर जो यहाँ पे हो सकता है, दिस कैन हैपन बिटवीन, सो आई विल जस्ट चेंज दिस एंड आई विल मेक इट ए एंड बी, तो आपको ये इजी हो जाएगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट? तो ये स्पिल ओवर बिटवीन ए एंड बी ये यहां पर आपका हो जाएगा। गाइस दिस इज क्लियर? यस सर ओके, तो ये आपका था विद रिस्पेक्ट टू द इशू प्राइस एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन। अब आ रहा है रेजर्वेशन ऑन द कॉम्पिटेटिव बेसिस। तो रेजर्वेशन किसके लिए कर सकते हो, वी हैव ऑलरेडी डन। सो जस्ट सी द इशूअर मे मेक रेजर्वेशन ऑन अ कॉम्पिटेटिव बेसिस आउट ऑफ द इशू बट excluding the promoter contribution। So if you remember हमने ऐसे ही किया था, offer through the prospectus less promoter contribution and you get what, offer through offer document, yes or no? Issue size other than promoter contribution, this implies what, this is offer through offer document। इसमें एम्प्लॉयज के लिए किया जा सकता है एंड ऑल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स, बट अदर देन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड सब्सिडरीज और लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज। और यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दैट द इशूअर शैल नॉट मेक एनी रिजर्वेशन फॉर द लीड मैनेजर। जो भी इंटरमीडियरीज आपके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है उनके लिए आपका नहीं हो सकता, डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज ऑफ द ग्रुप, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी चलेगा बट एम्प्लॉयज ऑफ द ग्रुप, राइट, एंड द एसोसिएट्स ये आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, इनका जो प्रमोटर्स और इन सब का जो ग्रुप है। सी बेसिकली यहाँ पर किसके लिए बात हो रहा है कि लीड मैनेजर का प्रमोटर, लीड मैनेजर का डायरेक्टर, लीड मैनेजर का एम्प्लॉयज और उनका कोई ग्रुप या एसोसिएट कंपनी अगर है उनके एम्प्लॉयज, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स। तो बेसिकली
इंटरमीडियरीज को क्लियरली यहाँ पर आउट रखा है कि आपके लिए कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होगा. Then the reservation on the competitive basis would be subject to the following conditions. Sub regulation 1 बताया किसके लिए होगा. Sub regulation 2 is telling you what is going to be the conditions and maximum limits and all. So employees के लिए जो यहाँ पे है that is maximum 5%. Maximum 5% of the post issue capital of the issuer. Okay. And the value of allotment of any employee shall not exceed 2 lakh rupees. Okay. फिर आपको बता रहा है प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन द एम्प्लॉय रिजर्वेशन प्रोपोर्शन, जो अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा दैट कैन बी गिवन टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और उस केस में अगर उसका जो एप्लीकेशन साइज है वो 2 लाख को एक्सीड भी कर जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू ट्राई दैट मैक्सिमम एम्प्लॉयज दे गेट part, basically they get the issue, they are part of this issue, and for that they have said that not every employee, so employees application size should not exceed 2 lakh rupees, and since we have only 5% of the reservation, so we want maximum number of people to be part of this, the maximum number of employees to be part of this. However, if let's say the employees are not very positive, or let's say they have not invested into the public issue, in that case if there is any other employee who is ready to invest more than दिस 2 लाख रुपीज अलाउ देम. सो प्रोवाइजो आपके लिए एक तरह का एक्सेप्शन बन के आता है, बट ये कब होगा व्हेन देयर इज अ अनसब्सक्राइब पोर्शन इन दिस 5%. देन reservation for the retail shareholder shall not exceed 10% of the issue size. तो आपका जो इशू साइज है उसका 10% से ज्यादा आप यहाँ पे रिजर्वेशन अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के, मतलब जो आपके ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनके लिए आप नहीं कर सकते. फिर अगर आप यहाँ पे देखो, नो फर्दर application for subscription in the net offer can be made by the person except an employee and retail individual shareholder in favor of whom on a competitive basis is being made. तो अगर आप यहाँ पे competitive basis पे fall कर चुके हो तो आप दोबारा से application वहाँ पर फाइल नहीं कर सकते except if you are a retail individual shareholder. आप बताओ, is this clear? Is this clear? ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then any unsubscribed portion from the reserved category वो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, और इंटर से एडजस्टमेंट्स भी आपका चलेगा विद इन वन कैटेगरी. सो एम्प्लॉइज ने सब्सक्राइब ज्यादा कर लिया, शेयर होल्डर्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव or they are not very excited, so you give the reserve portion of the shareholders to the employees, or you give the reserve portion of the employees to the shareholders. So ये आपका यहाँ पर चलेगा. So in case of under subscription in the net offer category, the spillover of to the extent of the under subscription shall be permitted from the reserved category to the net offer. So like how it was mentioned, maximum 5%. See आप अगर structuring check करो ना, they have made it in a very nice way. See how does it go? Structuring में ऐसा है, see this employee is being said that employee you are going to apply for maximum 2 lakh rupees. Okay, ये आपका maximum amount है, आप इससे ज्यादा subscribe नहीं कर सकते. He asked why I cannot. So the regulator is saying because 5% is the maximum amount which is reserved, and if I give all the securities to you, what other employees are going to get? So he is asking that what if the other employees do not subscribe, then the regulator is saying that okay, in that case you can exceed 2 lakh rupees also. ये आया समझ में? Guys, is this clear? Yes, sir. Okay, let's say this shareholder is Janet only. जनित रेगुलेटर को बोल रहा है मैं मैक्सिमम 2 लाख ही लगा सकता हूँ. रेगुलेटर से भी बोलता है यस 2 लाख लगा सकते हो. इज लाइक वाई, मतलब बाकी एम्प्लॉइज भी तो है, पूजा है, विनीशा है, ठीक है, मुस्कान है, सोहेल है, इनको भी शेयर्स में लगाना है. अगर इनको शेयर्स में लगाना है तो आप इनको लगाने दो. जनित इज नाउ आस्किंग व्हाट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड. Okay, what if they are not interested? What if they don't turn up for the issue? Then what is going to happen? बोले तब कोई दिक्कत नहीं, then you can exceed 2 lakh rupees. Guys, this is clear? Okay, the second reserved category is the 10% category, which is for the shareholders of the company. Janet is saying, can I go more than this 5%? Can I go this more than 5%? So SEBI says no,
आप जिनित एक कंपनी के एम्प्लॉय हो तो मैक्सिमम आपका 5% होगा. Jinit is saying, what if I want to invest more than this 5%? Is there a possibility? So regulator is saying, देखो 10% is reserved for the shareholders of the group company. So if the shareholders do not invest, okay, if the shareholders do not invest in this 10%, I can allow you to invest more than 5 and you can eat this portion also. Clear? Guys, clear? Yes, sir. राइट. वेस्ट नहीं जाना चाहिए. तो कोई एक इंसान है हु इज विलिंग टू, तो ठीक है लेने दो, पर एक से ज्यादा लोग अगर है तो फिर रहने दो. यू टेक इट एज अ फूड, यू टेक इट एज अ फूड. जिनित को बोला आपको मैक्सिमम 2 लाख ही खाने को मिलेगा. इज लाइक मुझे अगर और खाना है तो रेगुलेटर बोल रहा है और भी तो लोग हैं भूखे, सबको बराबर देना है. पर सर कोई और खाने को रेडी नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे को और भूख लगा हुआ है, तो चलो ठीक है 2 लाख से ऊपर चले जाओ. ही एट एंटायर 5%. नाउ ही सेइंग मुझे और भी भूख लगा है. सो रेगुलेटर इज सेइंग सॉरी, आपके लिए 5% रिजर्व करके रखा था, इसके बियॉन्ड आई कैन नॉट गिव यू. ही सेइंग दैट ये जो 10% आपने रिजर्व करके रखा है ये किसके लिए? बोला ये एम्प्लॉइज के, अपना शेयर होल्डर्स के लिए. बोला व्हाट इफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट सब्सक्राइब? बोला अगर वो नहीं करेंगे तो ये भी आप खा लेना. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर नाउ. Yes, sir. ये 10% खाने के बाद भी जनित बोलता है आई वांट टू हैव मोर, तो सेबी बोलता है नो, अब आपका जो रिजर्व कैटेगरी था, दूसरा वाला भी जो रिजर्व कैटेगरी था, दैट इज क्लोज्ड. ही सेज दैट ये जो एनओटीपी है, क्या यहाँ पे देखो कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है क्या? सो इफ देयर इज अ अंडर सब्सक्रिप्शन इन दिस एनओटीपी एंड जेनिथ इज रेडी टू सब्सक्राइब फॉर दिस शेयर्स, सिंस सेबी वुड से कोई दिक्कत नहीं, यू गो एंड यू सब्सक्राइब दीज शेयर्स. आया समझ में? बट टू रीच, सी हर एक, दिस इज द बेस लेवल, दिस इज द बेस लेवल दैट एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सीड 2 लाख. इसके बाद में एक प्रोवाइजो आ गया जिसमें बोला इफ देर इज अ शॉर्टफॉल, बेसिकली अंडर सब्सक्रिप्शन विद इन द सेम कैटेगरी, ही कैन सब्सक्राइब मोर देन 2 लाख. देन वी सेड spill over can be done into the reserved category if there is a shortfall in one particular category and there is a surplus in the other category. Then we said that reserved and the non-reserved one. So if in the non-reserved part there is any under subscription and if there is over subscription in the reserved category, you can again do the spillover. क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर Yes, हुआ sir. आपको? Yes, sir. राइट, लॉजिकल है ना ये वाला पूरा पॉइंट. इफ यू सी, ये बिल्कुल प्रोवाइजो और ये से जैसे बनाया हुआ है, दिस इज ऑल वेरी वेरी लॉजिकल हियर. तो ये पॉइंट आ गया. आगे बताया हुआ है एन एप्लीकेंट इन एनी रिजर्व्ड कैटेगरी में मेक एप्लीकेशन फॉर एनी number of specified securities but not exceeding the reserved portion for that particular category. ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है. नाउ वी गो हेड विद द एवरेज प्रोस्पेक्टस. बट उससे पहले मुझे बताओ, क्या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको क्लियर हुआ? क्या बेसिस ऑफ क्लियर अलॉटमेंट आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर. ओके. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसको एक बार वापस से आप रिवाइज कर लेना. देन वी हैव द एवरेज प्रोस्पेक्टस. नाउ एवरेज प्रोस्पेक्टस डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. It is basically salient features of the prospectus and it also contains the application form. So average prospectus shall contain the disclosures. अब ये disclosures कहाँ दिया हुआ है? Schedule 6 के अंदर. ठीक है. And then it says that जो भी आपका average prospectus होगा उसके साथ में there will be one application form and this will be again distributed to the issuer whoever is subscribing to the, this will be again distributed by the issuer who is basically सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. तो एप्लीकेंट्स को आप ये दोगे, राइट. नेक्स्ट यू हैव इज आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट. आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ over subscription and refund is all eradicated due to ASBA. Now if there is a over subscription, there is no refund, you can just release the money which is blocked into the account of the applicant. Then availability of the issue material. So यहाँ पे भी बताया है that it is the responsibility of the lead manager to ensure that the offer document and the other whatever materials are there, that is being given to the stock exchange syndicate, basically to any person before the opening of the issue. This has been, so the responsibilities of the lead manager here. Then prohibition on the payments of the incentive. So any person who is connected with the issue shall not offer any incentive, whether directly or indirectly, चाहे cash में हो या kind में हो, or you are providing services or otherwise to any person for making an application in the IPO.
So if a person is getting any incentives, let's say there is a investment advisor, registered investment advisor. This registered investment advisor is getting some money from the company or from the merchant banker, saying that why don't you give a buy call to your client. There is a portfolio manager, okay, उस पोर्टफोलियो मैनेजर को आप यहाँ पे कमीशन दे रहे हो और बोलते हो कि एक काम करो, आप अपने जितने भी क्लाइंट्स जिनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो वहां पे जाके आईपीओ में पैसा लगवा दो. देयर इज अ रिसर्च एनालिस्ट, उस रिसर्च एनालिस्ट को आप बोलते हो प्लीज एक काम करो, मेरे पब्लिक इशू के लिए आप बाय रिकमेंडेशन दे दो, सो दैट पीपल बाय टू द शेयर्स. सो एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द इशू shall not offer any incentive. Now यहाँ पे एक लूप होल भी रहता है that what if I am not connected to the issue. What if I am not connected to the issue? What if I am neighbor of the merchant banker and we are very good friends? Will you say I am connected to that merchant banker? And then can I do all these things? Can I do all these things? You got my question? Guys, you got my question? I am neighbor of the merchant banker. Who is the merchant banker? The BRLM for this issuer company. He cannot offer any incentive. I am his neighbor. Can I offer? Can I induce anyone to come and invest in the market? See, practically ऐसा केस आपको मिलेगा because everyone know the law. तो कोई भी यहाँ पे ये हरकत नहीं करेगा. The merchant banker would not do, nor the merchant banker his employee, neither his associate. No one is going to do that. But can I do so? Or is there a prohibition on me as well? Even though I am neighbor, I am not connected, but there is some sort of prohibition on me. So there is, just go and check section number 36 okay of the Companies Act. वहां पर बताया हुआ है punishment for inducing anyone to invest in the money, but वहां पे भी terms and conditions apply, that too if I am doing fraudulently. Otherwise there is no problem as such. So यहाँ पे वही बताया हुआ है any person who is connected with the issue shall not offer any incentives, right? कि आप किसी को induce नहीं कर सकते कि आप आओ मेरे पब्लिक इशू में लगाओ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया then there will be a problem. Why? Because ये सब चीज होगा. As far as these intermediaries are concerned, RIA, PMS and research analyst, इनके अपने respective regulations के अंदर बोला हुआ है that आप कोई भी सिक्योरिटी को, मतलब you cannot have any other source of income other than your commission, basically the fees which you are getting from your client. इसके अलावा आपके पास कोई भी यहाँ पर बेसिकली कोई भी यहाँ पे आपका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता एज फार एज फ्रॉम द मार्केट्स इज कंसर्न. आपका अगर अलग कोई बिजनेस है, यू हैव अ रेंटल इनकम, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट एज फार एज फ्रॉम द मार्केट्स आर कंसर्न यू कैन नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम. ओके, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज फाइन, बट ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कहीं से कमीशन और ये सब मिले. इज दिस क्लियर? यस सर. राइट. फिर देखो यहाँ पे आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट. सो यहाँ पे इशूअर को बोला हुआ है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन ही इज गोइंग टू डिपॉजिट विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज विच विल बी एटलीस्ट 1% ऑफ द इशू साइज, राइट, फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक. जो आपने किया उसका एनओटीपी, बेसिकली एनओटीपी का 1% आप स्टॉक एक्सचेंज के पास वहां पे रखोगे, एंड ये अमाउंट जो है ये रिफंड भी हो सकता है, होगा, और ये फोरफिट भी हो जाएगा विच विल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. सो बेसिकली पब्लिक इशू के अंदर आपने कुछ भी गड़बड़ किया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया, रिफंड नहीं किया, तो ये 1% आपका फोरफिट भी हो जाएगा. और अगर सब कुछ बराबर हो गया, कंपनी गॉट लिस्टेड, देन दिस विल ऑल्सो बी रिफंडेड. देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ ग्रेडिंग. नाउ आईपीओ ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले मैंडेटरी था. यहाँ पे पहले जो वर्ड था दिस यूज टू बी शैल. Now the word which they use is may. So a company may come up with a IPO grading. So if they do, then they'll have to report it.
If they do not do, then there is no need for this IPO grading. Now, who does this IPO grading? It is done by the CRA, Credit Rating Agency. They do the IPO grading. Okay. Underwriting. Now, if the issuer is coming up with a IPO other than the book build process and desires to have a underwritten, it shall appoint the underwriters in accordance with the SEBI underwriters regulation. अब यहाँ पे अगर आप देखो IPO other than the book building process, if you want to come up with a public issue, then you can appoint a underwriter. So what if it's a book built issue? What if it's a book built issue? क्या बुक बिल्डिंग में अंडरराइटिंग होगा? अब बुक बिल्डिंग में अंडरराइटिंग होगा या नहीं होगा, this we will cover in tomorrow's lecture, right? So we'll wrap up the lecture here, and from here we will continue tomorrow. Okay, Okay, sir. so that's it for today. Take care. Bye bye.